अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ग्रो टुगेदर। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर। आज हमारे साथ बहुत ही कोई खास मेहमान मौजूद हैं जो डिफरेंट पॉडकास्ट में उनको सुन रहा था और फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर स्पेशली टीनेजर्स के ऊपर हेल्प आउट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। Walaikum Assalam, Mudassir. क्या हाल है मोहसिन? खैर खैरियत से? I'm all good, Alhamdulillah. Thank you so much for having me. It's an absolute pleasure being here. Thank you so much for Mohsen for accepting invitation. I have seen that you have a paid number of podcasts or creating awareness, especially जब हमारे बच्चे होते हैं इसमें कुछ जहन में आ रहा होता है पढ़ाई का क्या फायदा और जब कमाना है तो कैसे सीखा जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को एक सही टाइम पे या राइट टाइम पे सीखा जा सके। बट बिफोर दैट मैं डिस्कस करना चाहूंगा Mm. आपकी अपनी जर्नी को, स्कूल लाइफ एजुकेशन आपकी अपनी कैसी रही? Sure. So I grew up in Saudi Arabia. So I was born in Riyadh, Saudi Arabia, and I grew up there. So all my initial education, jitni bhi thi meri, that was there. So up until my O levels, I've studied there. And then after O levels, I came to Pakistan. Yahan Karachi, DHA OA levels say I did my A levels. And yeah, I mean the journey, the academic journey up until my A levels was great. I mean, I when I was in Saudi Arabia, obviously life there was very different compared to life in Pakistan. So each year, I remember we used to come to Pakistan for summer vacations. So it was like just the fun element of it. But यहाँ हम कभी पढ़ा नहीं था तो didn't really realize what the Pakistan. So when I did my A levels from here, it was a very different experience. And after that, I did my bachelor's in accounting and finance from University of London का जो international program होता है from London School of Economics. So I completed that, and that was about a decade ago, so long back. And more recently, I completed my master's in economics from IOBM here in Karachi. So yeah. हाँ मोहसिन, स्पेशली बच्चे के जहन में सवाल आते हैं यार सब्जेक्ट चूज करने के हवाले से। तो ओ ए में जो आपने सब्जेक्ट चूज Mhm. किया, इज इट कॉमर्स, कोई आपने वहीं पर सिलेक्ट किया था या? नहीं 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 नहीं. So I've had a very different journey in that sense because I had science subjects. So I because I was pursuing to get into medicine when I was हम्म। younger. So I had never studied economics, accounting, business, maths. Maths to फिर भी पढ़ी थी, but not या all of these commerce subjects I had never studied. Even until my A levels, I ए had not लेवल्स। never studied these subjects. तो A levels तक the subjects that I had were biology, chemistry, physics, थोड़ी सी psychology टर्निंग भी पढ़ी पॉइंट थी. कैसा है Uh, साइंस टू but कॉमर्स? yeah, so I mean, थोड़ा सा जो turning point आया वो इस वजह से भी था because my O levels was from Saudi Arabia and my A levels was here from Pakistan, and essentially these are two different boards even in terms of Cambridge. So at that point in time, in medical colleges in Pakistan, the one that I was trying to get into, I was trying to get into a dentistry college. I wanted to become a dentist. So I mean, they had a policy that either you have both the things from here in Pakistan, so same board, ओह। or you have both the things from outside of Pakistan. Otherwise, you wouldn't get admission into the college. So that didn't work out in that sense. And after that, I had to rethink. Okay, so now what do I do? Because I can't go back and change that, and I can't go back and do my O levels from Pakistan. That wouldn't work as well. So then I started looking to get into any bachelor's program. Took a year off in between. Sort of started working at that point in time as well, and then started looking at options. कि अच्छा, अब next क्या करना है? And then I came across University of London's international program. And by that time, I was also giving admission tests of like, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। IBA and IOBM and, all of these colleges. But because I had never studied, business, economics, accountings, and all of those subjects, I was unable to clear any of those tests. And so University of London का जो international program था, that came about, and I got to know about it, and it was like, uh, I mean, it's an amazing program because you essentially are studying in the same institution, which is या there, same education, the qualification is theirs as well. 3 साल का program होता है, flexible learning है.
The degree is from there as well. Cost compared to the programs here in Pakistan is higher, because obviously it's in Hmm. pounds and all of that. Yeah. But compared to studying there, going there and studying the Yeah. same thing there, there's a significant difference, because you're staying at home and a lot of the expenses that you cover. So that program came along, and initially I started off with, and that was, for me, it was relatively easy to get into, because I had O levels, A levels, I had studied English, Yeah. and they did not require a prerequisite of Hmm. commerce subjects to sort of admit me into the program. I got admitted into development and economics, and then after 1 year, I changed into accounting and finance. Uh, and so the turning point, coming back to your question, the turning point was not my decision, mostly of the fate. Ki Yeah. this was how it's supposed to happen. But yeah, I mean, it's a good thing that happened. मुझे किस सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा मजा आया, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज? So I've studied everything, right? So economics, be accounting, business studies, be but I think finance be I gave CFA level 1 as well, and then worked in the Great. investment industry as well. But I fell in love with economics. I had not studied economics up until the first year of my undergrad degree. That was the first time that I studied Introduction to Economics. And for the first few classes, I was like, why aren't they teaching it to everyone, right? Because Yes. Yes. ये इतना close है to real Hmm. world, Yes. and इसकी जो application है is not just You can relate it something that easily. आप कहें कि सिर्फ commerce के बच्चों को सिखानी ही चाहिए. This is something that For needs to be everyone. taught to everyone, right? Yeah. It should not be a optional subject. It Hmm. should be a compulsory True. subject. And the more I learned about it, the more I liked it. And initially, there came a point when I actually started teaching it to my peers, right? Ah, So great. I got so good at it at one point that I started teaching it to my peers. And I remember कि हम जो हमारी classes होती थी उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे I used to just sort of teach my peers different concepts और वो सारी चीजें. Um, and I ended up scoring a distinction at that time in Great. Introduction to Economics. And it was, I mean, it was amazing and crazy because I had never studied it before. And also because, I mean, because University of London ke exams are much like OA levels in Yeah. that sense, because, there aren't any assignments or, midterms or anything that sort of gets culminated in terms of grades. All you have to do is just give one exam, Do and and die. that goes to UK, gets checked over Hmm. there, comes back. So there's not a lot you can do about it in terms of all of that. So even in that experience, it was amazing. So out of all of the subjects, I was like, this, and at that point in time, this was 2008, 2009. And at that time, I decided that if I ever were to do my master's, it has to be in economics. I mean, I'm Great. not going to go and do like Yeah. an MBA or anything of that sort. If I ever do my master's, if I ever were to specialize in something, it It's economics. certainly has to be in economics. ग्रेट. और इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ही बहुत मजे का, आपको रिलेट कर रहा होता है पर्सनल एग्जाम्पल से, जो कंट्रीज डिसीजंस ले रही होती हैं, किस तरीके से साइंस काम कर रही होती है पूरी. बड़ा मजा आता है सब्जेक्ट को पढ़ने में. जेनमो का स्टार्ट कहाँ से होता है? Okay, so before I get into GenMo, let me just sort of briefly comment on what you just said before. I think the kind of economics that I really like is far from the popular macroeconomics, right? Because generally, a lot of people that you talk to would talk about macroeconomics because, and in today's time, everybody's economist, right? Yeah. हर कोई जो है has an opinion on the economy and everything, right? So उसके बारे में बात भी ज्यादा होती है because of the given situation and all of those things. But and this is something that I realized when I was doing my master's is I came across behavioral economics, and behavioral economics was sort of is not an age-old discipline in that sense, but it sort of questioned everything जो कि economics के जो foundations हैं जो हमने सीखे थे उन सब को question करता है वो जाके, because one of the basic foundations of economics is the concept of rationality, right? जहाँ हम ये कहते हैं कि यार an individual is supposed to be rational, is expected to be rational in every foundation of economics, right?
But then, this gentleman, Richard Thaler and Cass Sunstein came along and they wrote a book called Nudge as well. And they worked with these two psychologists and they realized, okay, you know what? Human beings are not rational. If you observe in human being, हम रैशनल चीजें नहीं करते हैं बिकॉज ना हमारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है ना True. हम रैशनल चीजें करते हैं सो व्हाई इज दैट एन assumption that everything is based on, right? And then Sir Richard Thaler ended up winning a Nobel Prize for it as well, and they just created this another discipline that is a combination of psychology and economics. Economics. And it is so interesting because it has a lot of applications, public side pe bhi, private side pe bhi. And so that's the kind of economics that I fell in love with, essentially, and has a lot of applications in terms of financial education, financial capability, and all of those things as well, financial inclusion too. But not the glamorous macroeconomics and all of those things. I like to keep a view on it, but not something that I enjoy doing at all. So coming back to the other question, which is of GenMo. So I think GenMo, so now today, when anybody asks me, and I think I've said this before as well, कि GenMo kaise aaya, I think everything that I've done in my life so far, whether it's academically or career-wise, was to get me here, was to get me to a point where I could build GenMo for the next generation. It comes from a very intense passion for financial capability for the next generation. Because I've spent about 7 years in the investment industry, both as a stockbroker and as an investment portfolio manager. And during that time, I've had the opportunity to interact with it was amazing because जब आप किसी को बताते हैं, जब initially मैंने शुरू किया था, I was a stockbroker. And obviously, Pakistan, you don't meet a lot of stockbrokers, right? It's not a go-to career profession that usually people adopt, right? Bankers आपको बहुत मिलेंगे, बैंक में वो लोग बहुत काम करने जाते हैं, but stockbrokers नहीं बनते. So and which is understandable too, because you know a lot of people who are bankers, you know very little people who are stockbrokers, right? True. इसलिए शायद आप बैंक में अकाउंट भी खुलवा लेते हैं, बट आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते because it's just not something you're familiar with, right? True. So I was, I think, one of the first individuals in my family, extended family, or as far as I can look into, जिन्होंने स्टॉक मार्केट्स में काम किया, जिन्होंने क्योंकि मेरी फैमिली में कभी किसी ने शेयर भी नहीं खरीदा था, right? So stock market में काम करना was like another extreme, right? So when I started working, it was just so much fun because every day was a new day. Different, market was, different every day. It was not monotonous at all. Yes. It wasn't like, एक assembly line kind of a job है जहाँ पे, कोई बंदा 20 साल काम करके गया है और अब मैं वहाँ आके बैठ गया और अब मैंने वो काम करना शुरू कर दिया, So, so big MNCs and, usually, that's the kind of jobs that there are, right? Even in consulting firms and all of these things. But this was a completely different experience because किसी दिन आप, cement देख रहे हैं, किसी दिन आप banks देख रहे हैं, किसी दिन all you're trying to do is just explore कर रहे होते हैं. Fetch out new opportunities to make money, right? So it's a very a new kind of a puzzle that you're trying to solve every day, right? Obviously, Wolf of Wall Street जैसा नहीं होता कुछ भी, and I tell that to people a lot. कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, but as a profession, it's very engaging and it teaches you a lot and it sort of gets you to be a lot more engaged with what's happening around you, and how can you find money making opportunities out of that. So during that time, one of the key learnings, because I've had the opportunity to sort of manage portfolios of both individuals, high net worth individuals, and then companies as well, right? So during all of that time, I think one of the core learnings that I've had was there is a general lack of ability for people to take self-beneficial financial decisions, right? So लोग पैसे कमा लेते हैं, but ये नहीं decide कर पाते या ये decision नहीं ले पाते कि इस पैसे को मुझे लगाना कहाँ चाहिए, या wealth कैसे बनानी चाहिए, and all of those things, right? Yeah, and it's just
and it's across the board, right? So I can tell you that I've managed a portfolio of a CEO of one of the largest companies in Pakistan, और उस कंपनी का जो सिक्योरिटी गार्ड थे वहां पे उनका पोर्टफोलियो भी मैंने मैनेज किया. Great. Yeah, and it was a very interesting story. I mean, so I used to go there to meet the CEO a lot. I mean, portfolio presentations देते थे, बताते थे क्या करें, क्या बेचें, क्या खरीदें. And whenever you go into a company, you have to go through security. Yeah. तो सिक्योरिटी पे 3-4 लोग बैठे होते थे वहां अपना शनाख्ती कार्ड देते हैं, वो आपको कार्ड देते हैं विजिटर का, आप वहाँ खड़े होकर वेट करते हैं, जब आपको अंदर बुलाते हैं तो आप चले जाते हैं. So this gentleman there, he used to observe कि यार ये आते हैं, हर थोड़े अरसे बाद आते हैं और फिर चले जाते हैं. तो one day he asked me, he was like, जब उन्होंने मुझे दे दिया विजिटर पास, so he was like, sorry आपको मैंने आते जाते देखा है, बट आप काम क्या करते हैं? तो I told him कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, मैं इन्वेस्ट कराता हूँ and all of that. So he was like, okay, ये क्या होता है? So I explained it to him. And then he was like, अच्छा, so मेरे पास अगर कुछ पैसे हों तो can I invest? I was like, sure, why not? तो he was like, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो can we do it? I was like, yeah, sure, why not? मैंने कहा आप मुझे बताएं कब आप फ्री होंगे. Next time I come to meet you. तो we set up a meeting. I went to meet him. He came to our office as well. And for me, it was just amazing because Yeah. at the end of the day, it did not matter कि पैसे कितने, right? It could be 10 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं, 1 अरब रुपए भी हो सकते हैं, या 10 रुपए भी हो सकते हैं, 10,000 रुपए भी हो सकते हैं. Ultimately, आपने देखना है कि यार how can you actually allocate it in a way कि जो भी बंदा उसको इन्वेस्ट कर रहा है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, राइट? सो द अमाउंट, और ये मैंने हमेशा बोला, अमाउंट कभी भी मैटर नहीं करता. आई मीन, एंड दैट शुड नेवर बी a hurdle कि आप कहें नहीं यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, राइट? इट डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे. you just have to develop that ability कि हाँ यार ये जो भी पैसे हैं मुझे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, essentially, right? So but the underlying learning, as I was saying, was कि it did not matter, right? So even people who had money or who were in a position of power, even they did not know what to do with their money, right? I mean, they had me telling them कि यार अच्छा आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, right? अब वो आप कुछ भी कहें कि उनके पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो जो भी नहीं है, essentially वो स्किल नहीं है, right? Yes, skill set. They have a lot of insights that they speak to a lot of people and all of those things, but वो rely हमेशा अपने Expert स्टॉक opinion. ब्रोकर पे करते थे, या म्यूचुअल फंड के सेल्स के बंदे पे करते थे, या इंश्योरेंस के सेल्स के बंदे पे करते थे कि अच्छा यार व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू रिकमेंड दैट आई डू, राइट? एंड आई थिंक when I say self beneficial financial decisions is essentially means, और ये ऐसा नहीं है कि आपने कॉमर्स पढ़ा होगा या आपने मैथ पढ़ी होगी तो आप ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. One of the best investors that I have come across in my life have been people जिनका कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं उनका, right? But they have developed this ability to ask the right questions, right? So for example, if I were to tell you कि मुदस्सिर आप इस कंपनी के इतने शेयर खरीदने, right? मैंने खरीदे थे और वो बढ़ गए, right? Your question to me should be why, right? कि यार क्यों खरीदूं मैं, या आपने क्यों खरीदे थे, मतलब कोई वजह होगी उसकी. You need to, and if the other person can't explain that to you and just say कि नहीं यार वो बाजार ऊपर लगती है इसलिए खरीद लें, या इन्होंने खरीदे इसलिए खरीद लें, that's not a good enough answer for anyone, right? So essentially people don't have that ability. And then I reflected back onto why is that so, right? So people are educated, people are working in good positions, they have good exposures. Why is it that they're still not able to sort of take those decisions, right, for themselves? And one of the things that I realized, मोस्टली सब नेट के पैसा डूब जाता है, और डिफरेंट स्टोरीज आपने सुनी भी होती हैं, रिस्की है, मार्केट फ्लक्चुएट बहुत करती है. इस किस्म की कुछ स्टोरीज हैं जो कि हर किसी किसी फैमिली मेंबर में सुनी हुई हो, जिससे डर लग रहा होता है यार कि इंस्टेड ऑफ गो टू द स्टॉक मार्केट आई शुड आई इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी और द गोल्ड. वो चीज आई गेस उनको रोक रही होती है कि वो स्टॉक मार्केट में एंटर करें. नहीं, आप सही कह रहे हैं मुदस्सिर, बट देखिए द थिंग इज, मैं आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, राइट? एक जनरल एबिलिटी टू टेक
फाइनेंशियल डिसीजंस जो आपके लिए अच्छे हैं। या देखें, ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आज शायद आपके लिए अच्छा हो भी, नहीं भी हो ट्रू सकता, राइट? ट्रू एग्री बट इट इज सिमिलर फॉर अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, राइट? हर यस किसी के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सही नहीं होता। हर किसी एग्जैक्टली के लिए हर कोई इंश्योरेंस भी जाके नहीं लेता। क्यों नहीं ट्रू लेता? मतलब इट्स नॉट लाइक इंश्योरेंस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर एवरीवन, राइट? So it's not just about stocks. Although I come from a background of investing stocks and all of these things, even commodities as well. But the point that I'm trying to make is कि एक जनरल एबिलिटी होती है ना ये कहने की, यार आज मेरे जो सर्कमस्टांसेस हैं इनको देखते हुए where exactly how should I take decisions with my money? And it's not just about investing or saving, या right? It's spending as well, right? यस So मुझे बजट कैसे करना चाहिए, मुझे अपने पैसे खर्च कैसे करने चाहिए, सेव कैसे करना चाहिए, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। ये ट्रू सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की बात नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन और कल्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो ऐसा नहीं होता कि कोई स्पेंडिंग में बड़ा अच्छा है लेकिन वो फिर सेविंग के बारे में नहीं सोचता। ऐसा नहीं होता जनरली, राइट? पीपल हु आर गुड एट स्पेंडिंग और बजटिंग, आप देखेंगे कि वो सेव भी कर रहे होते हैं पैसे, या वो एवेन्यूज भी देख रहे होते हैं कि कहाँ पैसे हमें इन्वेस्ट करने लगाने चाहिए, एंड चाहिए ऑल यस ऑफ दैट दोस थिंग्स, राइट? So which is why I realized, if we look back, how do you actually learn about money? हम पैसों के बारे में कैसे सीखते हैं? या क्या कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका है? कोई नो स्कूल में आपको सिखाता है, कोई घर पे अनफॉर्चुनेटली आपको बताता है? It's not like that. Although it's globally recognized as an essential life skill, and irrespective आप कोई भी करियर पाथ चूज करेंगे, पैसे तो आप कमाएंगे, राइट? और उन पैसों को खर्च भी करेंगे, सेव भी करना है। इट डजेंट मैटर आप आर्टिस्ट बने या आप कॉमर्स में जाएं, कुछ भी करें, या मनी इज एन इवेंचुअलिटी फॉर एवरीवन, राइट? ट्रू बट उसको मैनेज कैसे करना है, नोबडी टीचेस यू या दिस दैट। इज द प्रॉब्लम स्कूल में नहीं सिखाते, राइट? पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाते। अब आप देखें, जब आप बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, बिजनेस पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें ये पढ़ा रहे हैं कि आप बिजनेसेस के पैसे कैसे मैनेज करें, यस राइट? पर्सनल पैसे कैसे मैनेज करने हैं वो नहीं दिस सिखाते इज आप। ट्रू ट्रू आप ये सिखाते कि बिजनेस के पैसे कैसे मैनेज करोगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस कैसे करोगे, डील्स कैसे करोगे, बिजनेस बेचोगे कैसे, वो सब सिखाते हैं आप। अपने पैसे कैसे मैनेज करने, वो जो डील करके कमीशन कमाओगे उसको या कैसे सेव करोगे और इन्वेस्ट करोगे, वो नहीं सिखाता कोई आपको, राइट? ऐसा ही है सो पर्सनल फाइनेंस एज अ कोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो स्कूल्स आपको नहीं सिखा रहे। फिर आप आ जाएं, एंड इट डज नॉट मैटर कि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं या आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस आपको कोई नहीं सिखा रहा। देन इट कम्स टू होम्स, राइट? घर पे अगर आप आते हैं तो जनरली इन आवर कल्चर एंड ओवर द वर्ल्ड एज वेल, चिल्ड्रन आर शील्डेड फ्रॉम मनी कॉन्वर्जेशन। हम बच्चों को दूर रखते हैं पैसे की कॉन्वर्जेशन से, राइट? ट्रू हम कहते हैं दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ, राइट? जनरली अम्मा अब्बा आपस में डिस्कस करते हैं, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, राइट? इट इज ओनली व्हेन यू गो थ्रू टाइम्स लाइक टुडे, जब इन्फ्लेशन ज्यादा है, जब आप अपनी गाड़ी अपग्रेड नहीं कर सकते, जब आप वो टीवी नहीं खरीद सकते बड़ा वाला, जब आप इस साल वेकेशन पे नहीं जा सकते, जब आप लेट्स से मे बी ईद पे नए कपड़े नहीं खरीद सकते, या हर हफ्ते जाके बाहर खाना नहीं खा सकते, तब आप जाके बच्चों को समझाते हैं कि यार देखो, ये हम नहीं कर सकते बिकॉज देयर पैसे इज अ नहीं है अभी प्रॉब्लम इतने। यस So only when there is a problem that you introduce children to money, which is wrong because it is a negative connotation, right? पहली बार जब मैं पैसों से इंट्रोड्यूस हुआ तो मैं एक नेगेटिव कॉनोटेशन में हुआ rather than a positive connotation, right? ट्रू अगर मुझे जनरली इन्वॉल्व किया जाए घर की बजटिंग में, बिल्स पे करने में, एक एक रेगुलर चीजों में, व्हेन थिंग्स आर गुड, आई वुड अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर। सो आप बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद जनरली लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी पाकिस्तान में लेट आती है, राइट? ट्रू बिकॉज बच्चे पाकिस्तान में लेट इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट? इवन आफ्टर बाहर तो यूनिवर्सिटी आप जब ग्रेजुएट बच्चा अंडर या सो बाहर तो जब बच्चा हाई स्कूल खत्म करता है, अंडरग्रेड करने जाता है, तो वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाती है बिकॉज वो घर से मूव आउट कर जाता है, अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? नौकरी भी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम वर्क भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ जब तक बच्चा अंडर ग्रेड करके बाहर नहीं आता तब तक वो वैसी जिंदगी गुजार रहा होता है जैसे वो हाई स्कूल में गुजार रहा होता है। नथिंग यस रियली चेंजेस, राइट? यस जब वो निकलता है बाहर, नौकरी करता है, पहली बार बैंक अकाउंट खुलता है उसका, वो भी सैलरी अकाउंट खुलता है, मजबूरी है, खोलना पड़ता है, पैसे आते हैं, खर्च करना शुरू करते हैं। देन आप पैसों के बारे में सीखते हैं थ्रू या थ्रू या ट्रायल एंड एरर, राइट? यस फिर आप गलतियां करते हैं। आप अपनी भी जिंदगी पे अगर रिफ्लेक्ट यस करें, मैं भी अपनी ट्रू जिंदगी पे ट्रू रिफ्लेक्ट ट्रू करूं,
तो अब आप कहेंगे यार ये 3-4 चीजें जो शायद मैं नहीं करता, तो मे बी इट ऐसा वुड ही हैव है। बीन बेटर फॉर मी, राइट? सो ऑब्वियसली कितने किस्म के ट्रायंगल्स होते हैं वो शायद हम्म। नहीं काम आ रहा हो आपको भी, बट ये वाली एजुकेशन आपको डेफिनेटली काम आती, राइट? एंड नथिंग अगेंस्ट कितने किस्म के ट्रायंगल्स होते हैं, आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट टू हम्म। लर्न एज वेल, but this is something that you'll actually apply in your life, which is where essentially GenMo came about. And I last 2021 May I taught a personal finance course to teenagers, right? ग्रेट। uh, which was a great experience because that made me realize कि अब तक मैं इनकी अम्मा अब्बा को पिच करता रहा कि वेल्थ बिल्ड करो, या। पैसे कमाओ, ये करो वो करो, which was always a hard sell, यस। right? बट ये जो जनरेशन है, इनको ये कन्विंस करने की जरूरत नहीं है दैट यू नीड टू बिल्ड वेल्थ, दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड ऑन दैट, यस। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कि करना कैसे वो बताओ, या। राइट? So tell us the opportunities that there are to invest money, to be good with money and all of those things, and which is why I felt that there is an absolute gap which exists there, because even in terms of financial products and services, आप शायद कई साल में एक बार ऐड देखते होंगे जिसमें आपको बच्चों के बैंक अकाउंट के बारे में बताया जाता है, राइट? यस। यू हार्डली सी एन एड ऑन दैट। आई गेस कोई दो ही बैंक है, मीजान और बैंक अल हबीब, जो टीनेजर्स के अकाउंट्स के ऑफर कर रहे होते हैं। वो भी एडवर्टाइजमेंट बहुत लो लेवल पे हो रही होती है। मैं आपको बताऊं कि सारे बैंक्स ऑफर करते हैं। सो अ माइनर अकाउंट इज समथिंग व्हिच इज ऑफर्ड बाय ऑल द बैंक्स इन पाकिस्तान, राइट? आपका बच्चा 1 साल का है या 25 साल का है, आप जाके 25 साल का तो नहीं खैर, बट 18-17 साल अंडर का है, 18। आप जाके उस बैंक अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी बैंक, बट it's just a shelf product. Nobody really talks about it in that sense, right? Which is why GenMo is important, because it brings both the elements together of learning and doing in that respect. अच्छा, जैन एजुकेट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, या उनको किस तरीके से पूरा एक प्रोडक्ट काम कर रहा है बच्चों को लेके? Okay, so GenMo is essentially going to be a family financial management solution, right? So a mobile app with a card, जो कि obviously which is focused towards teenagers. तो वो जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पे आप लर्निंग और डूइंग दोनों एस्पेक्ट्स को साथ लेकर आएंगे, क्योंकि खाली सिखाने का कोई फायदा नहीं है, या। राइट? आप एक 13 साल के बच्चे को सिखा देंगे कि बजटिंग करो या डेबिट कार्ड किस तरह यूज किया जाता है सिक्योरली, बट उसको डेबिट कार्ड नहीं देंगे यूज करने के लिए, तो वो भूल जाएगा, राइट? बिकॉज ट्रू। वो और बहुत कुछ सीखेगा। 5 साल बाद जब वो बड़ा होगा, 6 साल बाद बड़ा होगा, बैंक अकाउंट खोलेगा, तब तक वो सब कुछ भूल चुका होगा, राइट? सो जहां आप लर्निंग देंगे वहां आपको डूइंग की अपॉर्चुनिटी भी देना जरूरी है। एंड राइट नाउ व्हेन चिल्ड्रन आर ओनली स्पेंडिंग देयर पॉकेट मनी पर से, अगर वो कोई गलती कर भी देते हैं तो इसका कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, राइट? यस। 5,000 रुपए इधर उधर हो जाएंगे, 10,000 रुपए इधर उधर हो जाएंगे, राइट? बट जब यही बच्चा 10 साल बाद 1 लाख रुपए की गलती करेगा, सो दैट वुड हैव अ मच बिगर कॉन्सिक्वेंस ऑन देयर लाइफ, राइट? So it is a supervised platform where parents can essentially have a view of the activity of their children when it comes to spending money, transfer money to their children, and then there's a learning aspect of it, जहाँ पे बच्चे सीख सकते हैं about good practices of understanding about money, savings, investing, and all of those concepts, and then apply them with their own account and a card. हाँ, थैंक यू सो मच मोहसिन, लवली टॉक टू यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और लास्ट बस कुछ टाइम में आपका और लूंगा। बेसिक जो आपने बच्चा डील करना शुरू किया, हाउ वाज देयर रिएक्शन? किस हद तक उन्होंने इंटरेस्ट लिया, किस हद तक उसकी पूरे प्रोसेस में उन्होंने अपना आपको पार्टिसिपेट किया? Well, the reaction has, or the response has been phenomenal, right? Because there wasn't a product that was essentially designed for this generation, right? यस। And so we got an overwhelming response from our target audience, uh, and everyone was of the view, okay, uh, not only do we get a card or an account, वो तो पहले भी available था, but an app which gives you a direct experience of what money management should be like, right? Which is much more than just a bank account and a card, right? It gives you an opportunity to budget, create your own saving goals, track those saving goals, and all of those things.
Uh, um, and we have over 10,000 potential users on our waitlist at the Great, moment, a growing community, and thousands of ambassadors in that's 180 educational institutions across great. Pakistan, waiting for the app to come out, right? उसे So एक yeah. पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं। गुल्लक कल्चर ने कितना हेल्प आउट किया इस प्रोसेस को समझाने में लोगों को, क्योंकि हमें देखा है पहले लोग बच्चे घरों में गुल्लक हुआ करते थे, उसमें पैसे डालते थे, फिर वो तोड़ने के एक वो होता था वो। I think I'm actually the worst person to talk about Gullak. Why? Because I think, okay, uh, this particular generation, they do everything on their mobile phone, right? या खाना मंगाने से लेकर, शॉपिंग करने से लेकर, सोशलाइज एवरीथिंग। करने से लेकर, पढ़ाई करने तक सब कुछ फोन पे करते हैं, यस। राइट? इट्स दीज आर डिजिटल नेटिव्स, या राइट? गुल्लक, आई थिंक, शायद उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने यूज किया होगा यस। बिफोर द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट टू सेव फॉर व्हाटएवर, राइट? यस। आज तक वही अवेलेबल है यस। फॉर दीज चिल्ड्रन एज वेल. या It doesn't make any sense, right? It's criminal. If you ask me, it's criminal कि आप किसी बच्चे को आज की तारीख में गुल्लक लेके दें. It's criminal, which is why a digital platform is essential, because at the end of the day, you need to bring जो digitization की हम यस। बात करते हैं. I mean, out of जो हम कहते हैं ना, 6% of our population is under the age of 30. उसकी majority population is under the age of 18, right? So you have 100 million individuals जो 18 साल से कम के हैं. And which is why it is essential कि अगर उनको आपने डिजिटाइज करना है तो उन्हें बचपन में गुल्लक नहीं दें, उन्हें बचपन में आप जेनमो की ऐप डाउनलोड करके दें ताकि वो डिजिटली सेव कर यस। सकें. और गुल्लक, बिकॉज गुल्लक हैज नो, आई मीन, यू डोंट नो कितने पैसे उसके अंदर हैं, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ इट, एंड इट्स जस्ट, आई मीन, इट्स जस्ट समथिंग व्हिच, एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डू इट या एनीमोर, राइट? या बिकॉज या आप किसी 13 साल के बच्चे को आज जाके कहेंगे मैं तुम्हें गुल्लक खरीद के देखता हूँ, कहेगा यार, आई मीन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, राइट? I mean, it just doesn't work like that anymore. तो अक्सर बच्चे या तो सेव अपने माँ बाप के पास कर रहे होते हैं इन मोस्ट या ऑफ द वो केसेस सेव नहीं कर रहे होते हैं. नहीं कर रहे होते। एंड द ओनली रीजन इज कि देयर इज नॉट अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउज या देम टू डू इट डिजिटली. थैंक यू सो मच मोहसिन, इन लास्ट एनी एडवाइस यू वांट टू गिव? I think the only advice I would give to anyone is keep dreaming and keep pushing for whatever it is that you want to do, right? And whenever you feel like कि यार चीजें वैसी नहीं जा रही वैसे मैंने सोचा था, just think about the fact that maybe something better is in store, and there's always something better in store that happens for you, right? So keep dreaming, keep moving forward, keep pushing. Don't think कि जी नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं है या ये चीज मैं नहीं कर सकता. All of us are एग्री। born with same set of everything. हाँ, हमें कुछ नेचुरल बॉर्न टैलेंट्स होते हैं, बट उससे सिर्फ ये होता है कि किसी काम को हम जल्दी कर पाते हैं. यस। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आज मैं गिटार बजाना सीखना चाहूँ तो नहीं सीख सकता. शायद मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज यस। मुझे वो नेचुरल टैलेंट नहीं है, बट मैं सीख लूंगा, राइट? सो डोंट थिंक एंड आई हैव हर्ड पीपल से दिस अ लॉट कि entrepreneurship सबके लिए नहीं है, या people have gone to the absurd lengths of saying कि entrepreneurship तो DNA में होती है or something like that, and I was like, it's not like that. Anything that you can put your mind to, या you can do it, right? Because there is no difference between me, you, and anybody else out there, ट्रू। right? You just want it and work towards it. आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, you'll get there. कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से पहुंचता है, बट हर कोई जो कुछ आप करना चाहते हैं या किसी और को करता हुआ देखते हैं और आपको लगता है नहीं यार ये मुझे करना चाहिए, just go ahead and do it. The first step is just taking the decision of doing it. Everything else follows. थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत मजा आपके साथ बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला Oh, मुझे sure. भी. एंड लास्ट मैसेज फॉर द ऑडियंस कि डू शेयर दिस एपिसोड विद योर किड्स, टू ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि हाउ डज इट वर्क व्हेन दे हैव अ लैपटॉप, व्हेन दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैजेट्स जहाँ पे कार्टून्स और टिकटॉक और डिफरेंट वीडियोस को देख रहे होते हैं. वहाँ इस किस्म की चीज़ों को आप इस लेवल पर हमको एजुकेट कर देंगे तो इट विल गिव द बेनिफिट टू यू एज वेल. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे दें इजाजत. अल्लाह हाफिज.